हेलो गाइस, अभी हम लोग जो है ना लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इसको समझेंगे। ये वाली आपकी जो पावर बीआई फाइल है, ठीक है ना। व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली टू लुक इनटू इट, राइट। तो इसमें आपको यू विल गेट दिस स्टॉक हिस्टोरिकल समरी। ये आप देख रहे हैं ना, मैट्रिक्स रिपोर्ट। दिस इज बेसिकली बीइंग मेड फ्रॉम दिस रिपोर्ट, wherein this is the stock summary. What we have done is that we have taken the ledger view DSP from DSP2, and then using the cross join, we have, by the entire item summary, item hierarchy, we have made the with all the dates concurrency, right? And then we calculated the closing value from tally itself for each day. So this cannot go wrong. Right, that means for each date, जो है, this thing जो है. So basically, the new thing about this is that the stock summary, this cross join, is what we call the repeat set in tiling. So that has been replaced, and this is here we have added the cross join. So what everyone needs to do is that this item details, you need to add these objects, this part details and all. ये एक एक करके बस आप कॉपी करके ऐड करते चलेगा बस. राइट, दिस इज द स्टॉक आइटम हायरार्की पूरी की पूरी मिलेगी. एंड देन जो है, ये स्टॉक समरी का जो है, ये मैं इसका जो है मंथली का जो है एग्रीगेट कर दूंगा, ऐड का इसमें आ गया. नाउ हाउ टू रीड इट इज दैट, सपोज ये मैंने मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाया. नाउ यू ओपन योर टैली. सो दिस इज से लास्ट डे, दिस इज लास्ट डे सम कंपनी जस्ट देयर. लेट्स सी दिस हियर. दिस विल वर्क फॉर अनलिमिटेड कंपनीज. मैंने लास्ट डे पकड़ा, राइट. And on the last day, if I pick up this, अब आप इसकी पकड़ो, 31 जनवरी 2017 का देखेंगे तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए, 29,43,286, राइट. तो मैंने क्या, 31 जनवरी 2017, 31 1 2017 इधर पहुंच गए. एंड देन वी गो नाउ टू द स्टॉक समरी, राइट. 29,43,286, ठीक है ना. तो नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू स्टॉक वाइज और ये सब करने की, तो F3, F4, F2, F3, ये तीनों के तीनों जो है इसमें आएंगे. सो यू अंडरस्टैंड दिस, दीज फोर, F2, F3, F4, F5, दिस थिंग, ये चारों के चारों जो है इसमें आ जाएंगे. मैं स्निपिंग टूल में डाल पुट इट अप. तो ये जो मेरा कम्युनिटीज है में है, दे विल गेट दैट कंप्लीट ऑटोमेशन हियर, दिस थिंग इज देयर, राइट. इस वाली से जो है ना, आपको पूरा का पूरा यू विल गेट द कंप्लीट ऑटोमेशन स्टॉक वाइज मंथली. ये मंथली तो करते हैं ना, एनफ कंट्रोल, राइट. तो ये पूरा का पूरा जो ऑटोमेशन है वो इस व्यू में आ जाएगा. दिस इज दिस व्यू. सो आई पिक दिस अप हियर, ठीक है ना. इन दिस गोइंग टू बी द फर्स्ट व्यू, राइट. ये इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा. पिक अप समथिंग एल्स, आप किसी और मंथ का ले लो जिसमें कितना नंबर चेंज हुआ हो. आई पिक अप, एंड यू कैन रिमूव दिस टोटल आल्सो एट एनी वन टाइम. तो आप टोटल्स को जो है ना, रो सब टोटल्स को हटा दो, because you don't need that, right? You only need the columns of totals. You need the columns of totals, the rows of totals. You need the rows of totals, but you don't need the columns of totals, right? अब मैं नेक्स्ट वाला मंथ को ले लेता हूँ जिसमें कि मेरा कुछ चेंज हुआ. आई पिक अप 31 October, and this is 2022, right? So 31 October 2022, I pick this up period 31 10 2022, 31 10 2022, राइट. तो आप इसको 18,74,816.89, 18,74,816.8. So this will match across all the companies in this thing. तो ये जो पूरी की पूरी स्टॉक समरी की रिपोर्ट है, दिस हैज बीन टेकन केयर राइट फ्रॉम दिस. तो इसको पकड़ा एंड दिस हैज बीन टेकन केयर, राइट. So now I go back to this. Now this has been then extended to the profit and loss, this balance sheet, right? TCP आपके पास हमेशा होगी, so this thing is there. So this is actually, इसमें जो है ये वाली जो रिपोर्ट है, क्लोजिंग वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आपको यहाँ पे मिलेगी, ऑन दिस डेट, राइट. तो ये मैं क्लोजिंग वैल्यू आपके लेके आया, तो आप डाला सम हियर. एंड इसमें रिपोर्ट में बस एक ये चीज करनी है कि आपको व्हाट यू नीड टू डू इज, you don't need to do a
सम, तो आपको एक्चुअली पीएनएल में भी ये मिल ही जाएगी. If I look at P&L across any date, then you can actually get the closing value on any date. Right. So this has been taken. So ये आपका इधर आ जाएगा, and here it is your ledger actually is already with the balance sheet. So you guys can actually, do it. The company name, the closing balance is going to be the metrics. So that is already there. So within this, you can actually get your trial balance in the balance sheet. राइट. बहुत ध्यान से रखिएगा सर, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज हम लोगों ने दी इन स्टॉक आइटम व्यू. वी हैव एडेड दिस वाउचर. ये सेल्स 25 का कौन सा लेजर है, ये डेफिनेटली ऐड कर लीजिएगा. ठीक है ना, कि कौन सा लेजर पे किया, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द अकाउंटिंग एलोकेशन. ये अकाउंटिंग एलोकेशन से लिंक्ड है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस टाइम. एंड आप डिप्लॉय करिए. आपको मैंने नई टीसीपी इज ऑल्सो देयर. सो जो नई टीसीपी है वो इसका एनएफएक्स उससे आ जाएगी, एंड आप उसको डिप्लॉय करके यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट आउट. थैंक्स अ लॉट.